Namaskar, sir. Namaskar. So there are Namaskar. some problem, network issue. That's fine. Okay. Welcome, Namneet ma'am. Welcome. I think you have to make her a co-host. Welcome, Navneet ma'am. Namaste. Namaste, Namaste, Neetaji. namaste, Namaste to all namaste. masters. Very nice to join all of you again today. Was very beautiful meditation. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. So nice to see you. Yeah, nice to see all masters here. Wonderful. Thank you. So, sir, Okay, so before we go into any kind of discussion, so just want to update for the rest of the week. So we will be finishing our 22 days retreat by Sunday. So Saturday, Sunday you will be in Mauna. So Monday will be the integration. Okay, so Monday you can share your journey and also all the things you're writing down on a paper, all the emotional things, your fears. Okay, so we remember we have I've shown some points to write down and practice during this Mauna, the retreat. So you will be continuing the same process in the coming Saturday, Sunday also. And so Monday will be the final integration. We'll do it on Monday. And anybody have any questions regarding the retreat, how they are progressing and how they have to, any doubts, any confusions, and how they have to handle certain things? We can also write down, so we'll discuss it tomorrow. So tomorrow we'll discuss about questions regarding the retreat. Okay. तो फ्रेंड्स सर ने कहा है कि सैटरडे संडे हम सभी का मौन है। मंडे को हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे कि हमने जो इस जर्नी में जो भी हमारे इमोशनल थिंग्स हमारे सरफेस पर आई हैं, हमने जो भी डर को एक्नॉलेज किया है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे मंडे के दिन। और ये रिट्रीट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कल आप लोग पूछ सकते हैं। कल रिट्रीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स करे जाएंगे। यस सर। So now you can go ahead with satsang with Navneet ji. Yes, yes, yes. Navneet ji, there are many questions related to relationship and other things also. What? Okay. Being a meditation coach, I'm asking, how do you manage your physical and spiritual life? And I'm facing a lot of problems in my spiritual path because I face many challenges. So how do we manage? It is not easy, na? When one partner is active and other partner is supportive. So there are some misunderstandings. Sometimes I feel very, very regret and guilty, and sometimes I feel very selfishness, very, very selfish. So sometimes I cannot manage both the life. So do you face the same problems, or because both of you are very active, na? So do you face the same problem? Okay, so Neetaji, for anybody meditator or non-meditator, all persons in the family is part of their journey, you know. Like I'm doing meditation, but whoever I meet in my life is part of my spiritual journey. We cannot separate. We don't say this is home, this is my home life, this is my spiritual life, and this home life is separate, this spiritual life is separate. No, all are one. All if somebody tomorrow I meet, I make a new friend and he's not respectful or not nice person to me, that is for my learning, right? So if a husband or family, my parents, they don't do meditation. I meet them regularly here in Singapore, and I also face challenges from non-meditators.
So they are all part of my journey. They are not separate. People, my parents are not separate. They are also part of my journey. So we take everybody is in oneness. We are doing this oneness meditation now. We are all is in oneness, right? That's why we do oneness. Everyone we meet is a part of our journey, and it's all for our learning. So I just take it as a learning. No, I want to say, Navneet ji, I cannot give more time to my family because I have some work related to my spirituality. So I cannot manage physical life as like I did before. Of course, I have lot of Yes, work. that will change. That is why I'm asking how can we manage? Because Sansar mein Nirvana, Patri sir told, it is the toughest job I can say. Okay. So only those who match your frequency will join you. You see, my parents don't join me. They don't match my frequency. So I No, don't spend time with them. my husband, my kids, all are meditators, but they are not so much active as I am. So sometimes they understand, sometimes they feel happy, but 1 or 2 days in a month, they feel irritated. And that is why I feel guilty. Sometimes I feel irritated. So, Patricia told Sansar Nirvana, middle path, Buddha. So that is why Okay. I'm asking. So this irritation is for you, for your learning. Your guilt, your irritation is for you. It's not for them. No, it's for you. Yeah. You take it. Just hug it. Hug it. Hug it. The irritation, we have to hug it. Is part of the journey. And then it'll go away. Slowly it goes away. No guilt. Everything happens in the flow. Those who match our frequency, they are close to us. Those who don't match, they are a little bit far. Those who don't match at all, they are very, very far. They are too far away. We can't see them. So it's okay. Those we mix with people. Birds of a feather flock together. So no guilt. All this is created by you. Irritation, guilt. So you gotta hug it. Hug it. Be kind to yourself. Yeah. Just continuing with her question Sir, only. Pradeep sir, please give some more insight. No, madam. Only one person will answer. Okay, so today is satsang with her. Okay, sir. Okay. Navneet ji, is there any golden mean in between so that we will have a win-win situation? Like Nita ma'am will also happy and her family will also happy, because same thing would be happening with my family as well. So can we have, is there any guidance that we will have win-win situation and golden mean of that? Yeah, we drop the expectations. We drop expectations. So what I did last time, my parents have expectations. I should meet them every, once a week. I should be with them. I should spend time with them. Otherwise, they feel bad, then I feel guilty. So I drop my expectations and I speak my truth. And I say, this is what I'm going to do. So when you are living in the family, you share what is your feeling. And if other people can't accept, then it's not your problem, right? How can you take the burden? Then you will feel whole life, you will feel so guilty. You are not here for others, you are here for yourself. Right? How you will grow like this with the heaviness on? You must feel light. A spiritual journey is a journey of feeling more and more light. The more spiritual we become, the more the feeling inside is so light. So without any burdens, without any pain. So this is how we gauge, we become more and more light. So if other people can't understand us, it's not our problem. People who don't do meditation cannot understand us. And people who do meditation, they understand us a little bit. And people who do a lot of meditation, they understand us a lot. So Pradeep ji does a lot of meditation. I do meditation. So we understand each other. So like this, the understanding comes from meditation. If somebody is not doing meditation, they cannot understand you 100%, and you cannot fulfill their expectations. And don't feel guilty. It's all part of the journey. There's no middle path. Just go with the flow. Go with the flow, no expectations. When you feel like you have to
put the barriers, put a boundary. Then you put the boundary. You say, now is my time. I cannot be with you. Sorry. No regret. Nothing. Like this, we live moment to moment. Yeah. Yes. I would Uh, rather say, Neetaji, just because you asked, I would rather say if you are in the spiritual path, you should look forward for the challenges. You should celebrate your challenges. Because there are more the challenges, more there is spiritual growth. Okay. So it doesn't mean like people who are meditators, they don't have challenges. No, they have more challenges than normal people. Okay. So you could also notice in your life, before you come into meditation, there were challenges. But after you come into meditation, the challenges increased. Yes or no? The Yeah, challenges yeah. increased. Actually, bilkul, since bilkul. Yes. since last 1 month means my challenges are increased too much. So now it's like Yes. it's just a challenge only. Nothing else is there. Naturally, it happens like that because once you come into meditation, you are on a fast track of spiritual progress. So when you are on the fast track of spiritual progress, what happens? You want to burn a lot of karma. You want to clear a lot of karma. So you take all your karmas to clear it faster. So when you take all your karmas to clear it faster, then more challenges come. So challenges are not something for you to feel sad about it. Challenges are something for you to celebrate because more the challenges, more lessons, more spiritual growth. Yeah. In fact, I have a support from my family, my wife. But again, my challenges will be my challenges. So those are increasing, and that's really great. And especially if somebody has a partner who is a non-meditator, or somebody has a partner who just very little meditation, then you should feel very happy because sometimes they act as a balance for us. They act as a grounding. Just imagine if both the people are meditating, both the people are flying in the sky, then where is the balance? You need some balance. Yeah. Middle path. Sometimes, for example, one partner is meditating. They will all think in the airy-fairy most of the time. And another partner keeps a reality check because that is where you learn. Okay, so this is how you have to balance it in a physical way because you have to be very simple. If you have everything nice in your relationship and you are nice to them in return, then what a big deal is it? When everybody likes you, you love them naturally. But if nobody likes you, still you love them. That is a quality of a Buddha. Okay, so this non-judgmental acceptance. Okay, this you can underline this word, non-judgmental acceptance. This is a very, very important word, non-judgmental acceptance. The more you practice non-judgmental acceptance towards your own family members, towards your relationships, towards your friends, you are a real master. Whatever they are, you should just accept them without any judgments. When you accept the other person without any judgments, then you see the magic. The real magic happens. The person who is not meditating in your life, because you accept them without any judgments, they will start listening to you because they feel such great amount of love from you. Without any judgments, you accept them. So they will accept you and naturally they will support you. What you give comes back to you. This is law of karma. It doesn't happen overnight. You practice non-judgmental acceptance. You will receive it sooner or later. You will receive the same thing back from the same person. Not immediately, but over a period of time. Yeah. This is how Buddha inspired thousands and thousands of people by practicing non-judgmental acceptance. Jesus practiced non-judgmental acceptance. Gandhi practiced non-judgmental acceptance. Okay, so this non-judgmental acceptance is very, very important. And to have a non-judgmental acceptance, you need a lot of meditation. So it is the responsibility of every meditator to accept everybody in their family, everybody in their friends, without any judgments. This is the sign of a master.
Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. So the part which you say, balancing, one family member is balancing you. Literally, I'm experiencing that. That is happening with me. My wife is also meditator. My son is also meditator. But still, the balancing happens because level of meditations are different within the family. So thank you very much, sir. It's a great So, understanding. You sir, are going through a lot of learnings. so that is why we are doubt ourselves. Ki I am doing right thing. I'm justified with my family. That is why I feel sometimes guilty. Ki I'm doing the extreme thing. I should stop it and I should focus on my family. That is why, Navneet ji, I am asking this question. Thank you very much. Thank you. See, in my case, in my family, my father is not a meditator, and he doesn't understand all those spiritual things. He understands more of materialistic things. Okay. So, but he is a great teacher for me in this life. Okay. So he reflects my weakness. Sometimes I feel irritated with him. Right. So that is the time I catch hold of myself. Oh, he is a teacher to me. Because every time I feel irritated with him, then I catch hold of myself. I said, okay, so you are not accepting. So why there is judgment? So you have to accept. So these people in your life, they help you to grow. That's why I say more challenges, more growth for you. You have to take it as a mirror reflection. And it's not like, I'm just teaching you theoretically. I'm teaching you practically because this is my practical experience. And I told you before also, between me and Navneet also, there are sometimes we disagree many things. There are many times we quarrel and fight. But what to do? We have to come together. We have to make peace. So one person has to surrender. Okay, one person has to surrender. If nobody surrenders, the relationship breaks apart. So one person has to surrender. So the person who surrender first gets the advantage because the person who surrender first has to let go of the ego. So every time you are in a relationship, there is an opportunity for you to check your ego because ego plays a very important role, right? So that's where you educate your ego. Every time you educate your ego, you tell yourself, it's okay. What a big deal. I love this person. It's okay. I surrender. What a big deal. So it is our family members and friends who help us a lot. So it is very important to make every relationship around you beautiful. That is the benchmark of spiritual. That is the benchmark of enlightenment. If you are really enlightened, then you should be comfortable with everybody around you. Of course, with some people you cannot get along, but take your time. But the target is you have to make peace. There is no other way. You have to make peace with everybody. Take your own time. Don't need to rush. But the clarity should be there that it's not that you are perfect, other person is wrong. No, you are also imperfect. So you also have to learn. Sir, I always surrender, sir. My husband never surrender. I always surrender. This is the attitude. This is the problem. This is exactly the problem. You see, just now you said, I always surrender, my husband doesn't surrender. This is the problem. You blame your husband now. No, This sir, is the I'm problem. not blame because in Indian culture, No. sir. This is, you cannot do this. How can you say your husband never surrender? You ask your husband. You ask your husband. He will say the He's in the exact same meeting. thing. I always surrender. She doesn't surrender. Shri? See, this is in every relationship, this is the problem. In every relationship, they think they are very sensitive. The other person is hard. This is exactly the problem. Maybe. So that's why you should Unmute never my force husband. time. Please unmute No, SCP. He will you speak. don't need to unmute, madam. I'm telling you, in general, in every relationship, this is the problem, right? So you should take responsibility. Don't put
Anybody like, okay, I'm sensitive, I'm a meditator, I always give up. No, you are seeing only from your perspective. You are not able to see from the other's perspective. When you start seeing from the other's perspective, then you understand, wow, there is something for me to learn also. It is very important to see from the other's perspective. If you Sir, see he's a from your great, perspective, if you see only from your perspective, then there is judgments. And when you have judgments, then you have no place in the heart for friendship, for love. sir, he's a great teacher. He supports me a lot. And without him, I cannot do anything. I know very well. But Yeah, you know very well, but it should be in the words also. You see? no, sir, when the question of surrender, I stick to No, my madam. statement. No, it is not the case. In a relationship, you see, I'll tell you, especially the close relationships are our mirror reflections. Okay, very close relationships are our mirror reflections, especially husband-wife. If one person is authentic, the other person has to be authentic. You can check with your friends, with anybody. If you are always honest, the other person cannot lie to you. Because you are so honest, the other person cannot lie to you. 1 day, 2 days, 3 days, after that, he will feel so bad, he will become honest with you. So, whatever you are, that is what you will reflect upon. So, maybe your husband is a very tough teacher. Maybe you have to learn unconditional surrender. Maybe he's teaching you to surrender unconditionally. So, thank him. Thank him. Naturally, see, if one person surrenders in the relationship, the other person naturally melt. The other person also has to surrender. Okay, so then there is a beauty. So instead of blaming others, we should take responsibility. Okay, This is sir, what okay. this is what I have experienced in my relationship. In the beginning, I used to think like I'm a great person. I'm so sensitive. My partner is not understanding. But then I realized when I started seeing from her perspective, I realized there are many things I don't know. There are many things I thought I know, but many things I don't know. So it is very important. Our challenges are for our growth. Any challenge is for our growth. Okay, so that is the bottom line. Thank you, sir. Over to Thank you, Navneet. sir. Yes, Navneet ji. Very, very nice explained. Very nicely explained. Thank you, both of you. Yes, madam. Next question. माही कोई क्वेश्चन है रिलेशनशिप से ही इशू के ही या कोई दूसरा? क्वेश्चन तो है मेरे पास जो मैसेजेस आए थे उनमें से मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. So sir, these Navneet ma'am, these are the messages that I got from people. So there was a lady who told me that she got molested when she was a child, and she really feels very uncomfortable when she goes to public places or parties, or whenever men are around, she feels very uncomfortable. So she asked how to get rid of this. The first question was that. Okay, and what does she do now? She's a married woman, and she's a housewife. And she's meditating for... She is meditating for last few months. Okay. So this happened when she was a child? Yes, mostly, and this was, by those kind of people whom she doesn't know, like those were roadsiders or, other people. Okay, this is like a childhood trauma. So this will affect a lot of things emotionally, spiritually, mentally, psychologically. I can only say that a lot of necessary to be with right company, people who are loving,
people who are very gentle, people who are understanding. The company must be there. And then doing meditation, I feel all answers can be only come from our meditation. I myself receive all answers from my meditation, so I don't recommend anything else. Doing more and more meditation will give answers why this happened, and slowly the trauma will go away. The first step is having the respect for the self, because when this type of molest happens, a woman loses her self-dignity. This is the first thing that goes, the self-dignity, self-respect. So this comes in deep meditation. When you connect with your soul, then you start to let go the shame energy, because this brings shame. Molest brings dignity. You lose your self-respect, your dignity, and then shame energy comes. So you feel very shameful, as if something very shameful happened in your life. So this shame energy only goes away with deep meditation. Just do journaling, do writing out the experiences, how you feel every day. I believe in this retreat, all these things are being done, the mauna and the fasting, liquid diets, deep meditation, and anger is also there. So anger will be released in mauna. If you have a lot of emotions, a lot of anger, this childhood event that creates a lot of these disturbing emotions. So mauna is a wonderful way to look at all emotions, and then to look at the emotions, and in the silence. When you are silent, a lot of spiritual energy gets conserved. So then this energy can be used for healing, and a lot of emotions come up on the day of the mauna. So I believe this person is doing all these things. It takes time, but it will definitely go away. And this is what I can share. Absolutely. Yeah. Thank you, ma'am. There was another question from her only, that she has observed this only after coming into meditation, that when she was a child once, and her friend was suffering from a disease, and she was feeling really sad about it, and eventually she also suffered from that disease. And when she grew a little younger, then her mother was also having a kind of chronic depression, and she also took that from her mother, and she eventually ended up having that depression also. So she was confused that why is this happening, and I told her meditation is the only solution, but she was like, why is this happening, and how can I get rid of it, because these are the instances, I mean, these are the things that has been happening every now and then. Okay, so what your question is, why these things happen in our life? Yes. All these things happen because of your karma. That's all I will say. You did something. Your thoughts create your destiny. So you are carrying some thoughts that make you depressed, that cause these events. So it's your karma, and the only way to overcome it is doing meditation. Yeah, that's the only way. There's nothing. There's no other magic formula. Being with this satsang is very helpful. So be with like-minded, positive people. When you are in so negativity, you need to be with positive people. So this satsang is very good. Sure. Sure. Thank you. And sir and ma'am, for both of you, there's a request that if you could please, in any time in future, if you could arrange a session for youngsters, because they are the ones who are suffering a lot in this period. And if we educate them at this age, it will be really good. So this is just a message that if you ever host a session for youngsters from 20 years or 18, 19 years, it will be really great, and we all will be thankful to you. You mean the teenagers? Yes, sir. Teenagers. Yes. Yeah. Why not? Why not? So there was a request from a parent. So she asked me to convey this to you. Yes. The answer is yes. Why not? Always there. Yes, sir. In the month of July, we will manage. Yeah. And it can be in English only, as she said. She told me that it can be in English only. Okay, fine. That is clear. File is already approved.
But what about Hindi people? We cannot we should justify with all, na? Yeah, of course. Yeah, But Hindi she told, people have no problem. Do you think that? no, of course not. It is a North Indian group, so we should speak Hindi. And That's okay. Those fine details we can discuss internally later. Not a big deal. That parent is. So, next question. माई है तुम्हारे पास? There is one more question on Bible. So there is this Christian lady, and she says that we focus on vegetarianism, but in Bible and even Jesus has always mentioned that it is not important. You can eat anything, whatever you want. So if vegetarianism was so important, why is it not mentioned in Bible? Unless she becomes a meditator, she cannot understand Jesus Christ. And unless you understand Jesus Christ, you cannot understand his teachings. So only a meditator can understand any enlightened master. Okay, so unless you play cricket, you don't understand what great player Kohli or Dhoni or Tendulkar is. Unless you play cricket, you don't know what great players they are. So unless you practice meditation, you cannot understand their teachings. Okay, so ask them to meditate more. Sure. And in the Bible, it is very clearly said, "Thou shall not kill." Full stop. It's very clearly written in Bible, spoken by Jesus Christ. Thou shall not kill. Right? And then it's very clear, said, love thyself first, and then love thy neighbor as you love yourself. The neighbors are not the people. The neighbors are all the other living beings who are living with you in the same planet Earth. They are our neighbors. Okay. So Jesus was always for non-violence. And he always carry a small baby goat in his arms. That is the way he symbolically represents his compassion towards all animal kingdom. And he cannot speak about killing and violence and eating meat. So that is very disgusting. For a master like Jesus Christ, he cannot speak those words. So it is, you see, as long as the master is alive, then there is a possibility the people understand right way. But once the master vacates the body, then the misunderstanding starts. Naturally, the misunderstanding starts. And Bible was not written when Jesus Christ was alive. Okay. So it is his disciples who wrote later on, who heard his teachings, and he wrote later on. It was written in Hebrew language. It was translated multiple times. And have you heard of this Cathars community? There is a community called Cathars. Okay, you can Google it. They are the true Cathars. They are the true followers of Jesus Christ's teachings. They were vegetarians and they were meditators. They used to live in France. Okay, and when this Roman Empire was at peak, so their teachings were completely against them. So they wiped off the entire community. They killed every single person who followed Jesus Christ's teaching because it doesn't suit them. They killed. So we in our travels in Europe, we met people who follow Jesus Christ who are still vegetarians, who meditate also. So the real teachings of Jesus Christ is always misunderstood. It is the same with every master. So that's why I say, unless you are a meditator, you cannot understand Jesus Christ. Okay, madam. Okay, sir. Thank you. Sir, this is my question. I would just like to request for some tips on parenting. I have a 3-year-old daughter. So from you and from Navneet ma'am, if you could give me some tips on parenting. Very simple. Do more meditation. Respect your children. Okay, so don't think they don't know anything and you have to teach them. No,
they know, especially the newborn babies who are born after 2012. They have a lot of wisdom with them. So the more you meditate, the more naturally you become sensitive towards your children. So meditation is very important, and try to respect them and try to learn from them. So when you respect them, because children learn not through the words of the parents, children learn from the behavior of the parents. So you start respecting them, so eventually they will start respecting you. So it is the respect which is important. So the relationship is based on the respect and trust. You start trusting them, you start respecting them, then naturally they will learn those qualities, and there will be a beautiful relationship. Okay, and these newborn children, they are very smart children, right? They are very, very smart. All the newborn children are very smart. You Too much. cannot give them any cock and bull stories to convince them. You have to speak the truth and you have to be authentic. So this is very important. So to be a mother or a father is a great responsibility, and it's a great learning experience. And as long as you are a meditator, you will be you will be a very good mother. Eventually, you will be a good mother. Don't need to worry about it. So just focus on doing more meditation, and respect is important. Respect and trust, it is important. I'll just add that small children need a lot of affection. You said she's 3 years old. So show them a lot of affection with hugs, kisses, hugs. They need a lot of affection when they are young, when they're small. At that age, they appreciate your hugs and affection. As they get older, their mindset changes. So at this young age, they must feel a lot your love. And then you will have a strong bond. Absolutely. And I think we really have to catch up with them. मतलब जैसे मेरी मदर ने मेरे साथ किया था, मतलब उन्होंने जो जनरेशन गैप अभी का है और अभी the way things are happening with these kids, we really have to catch up with them. And these kids are very highly evolved. I can feel it from a very young age that she's really evolved, and she knows so much in spite of me not conveying it to her. She knows so much about it. Yeah, the kids these days, I believe they come with the three-strand DNA. They are more evolved than us. Yeah, absolutely. Correct. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So if we can take the questions also from the people who raise their hands. Sir, there is one question. How to deal with parents, because some parents are very stubborn, उन लोग नहीं सुनते हैं पेरेंट्स लोग, तो पेरेंट्स के साथ कैसे डील करें और न्यू जनरेशन के साथ, because I let Navneet answer first. Okay, so who is dealing with the parents, the teenagers? Or no 40 plus, so they have to manage children and parents, and both are just opposite of them. तो उन्होंने पूछा कि मैं पेरेंट्स को कैसे समझाऊं अपने, कि मतलब कंजर्वेटिव होते हैं ना नवनीत, पेरेंट्स आर वेरी स्टबर्न एंड वेरी कंजर्वेटिव, so they cannot listen to their children, and जो जिसने क्वेश्चन पूछा है वो मेरी एज की है, तो उसको पेरेंट्स को भी डील करना है, अपने बच्चों को भी डील करना है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? वो जनरेशन शी शुड मैनेज ना, दोनों को उसको करना चाहिए मैनेज. I think it's the same question as just now. You asked, okay, how I will manage with my family, my husband, and I'm a nuclear family, है ना? So parents live separately. But when there is a joint family, so so they live together. So to the parents को कैसे वो मैनेज करें? जैसे अब मैं कैसे बोलूं? What's there to manage? They are independent. They are adults. You don't know about the Indian culture, na? Or maybe I'm not sure, because here we live. Your parents don't live together with the children, and it's quite independent.
but we meet the parents, and we keep in touch with the parents. We keep in touch with the extended family, and we don't feel we need to manage unless somebody is sick. Like if the parent is sick or not feeling well, sickness is there, mental sickness or physical sickness, disease, then we worry a little bit. We worry why, how to manage them. But if they are fine, then we keep friendship with them. You know, once the child is no more, is old, becomes an adult, then the parent is friend. The parent is no more mother and father. The parent is a friend. It's like going to visit my friend. So in Singapore, it's like visiting my parents is like visiting my friend. It's not visiting, mother and father. We are now, because I'm an adult, so it's like visiting friends. So if they are independent, then it's like visiting a friend and keeping in touch with the friend. But if there's something to worry about, sickness or any sickness, then yes, we give our time and energy. So maybe I'm not understanding the culture. I'm sorry. Yeah, that is. I'm sorry. Maybe I'm not understanding No, so much. no, you are correct. These things, we have to learn from the West. We have to learn from the animal kingdom how to be good parents. We have to learn from the mineral kingdom. We have to learn from the bird kingdom. We have to learn from the nature how to be good parents. Only the humans, they do everything extra. Okay. So when your children are small, then you need parenting. But when your children are grown up, then you need only friendship. There's no parenting. But in India, the mother remains the mother. Even the son is 50 years, the mother remains the mother. That is a problem. And when the mother is 80 and the child is, for example, 60, still even though in spite of 60 years, the child remains a child. So this is the problem. They don't grow up. And this is what we have to learn, right? We have to learn. So where to begin? If you are living in a joint family, where to begin? You have to begin with yourself. You have to start treating everybody as your friends. When you start treating everybody as your friends, see, I'm born and brought up in India. I come from a joint family where there were 26 people in the same house, right? So until the age of 18, I was in a joint family where we have aunts, uncles, grandfathers, grandparents, everybody living in the same house. Even if you want to go out to a movie, you have to tell 20 people. You have to take permission from 20 people to go for a movie. So that kind of a joint family. And all your decisions you have to communicate. And you have to take permission from third generation to second generation. Take permission from great grandmother, then mother. Right. So by the time you take all the permissions, the movie will start. So these kind of challenges were also there. But after I came into meditation, right? So after I came into meditation, I started converting all the relationships into friendships. Every relationship has to convert into friendship. So my own mother, I treat her like a friend. Yes, of course, all the love and affection is there, but it's more friendship. Okay. And I treat my sisters, my brothers as friends. Everybody, whether they are younger to me, they are elder to me, I have to treat them as friends. So unless you treat your relationships as your friends, you don't know how to deal with them. Because you are dealing with your emotions. So when you are kind to yourself, you will be kind to others. Okay, so sometimes you ask the question, I don't know how to handle the relationship. That is your question. So you don't know how to handle the relationship outside because you don't know how to handle the relationship with you. That is a problem. When you are so comfortable with your own relationship, then naturally you will be comfortable with other relationship. Your relationship with yourself has to be a good friendship. That's why intense meditation is needed. The more you meditate, the more you make friend to yourself. So this friendship will extend to all the relationships. Then that extra drama will not be there. All the extra tail will be cut. Unnecessary
emotions, unnecessary dramas will not be there. The relationship will be more authentic, more meaningful. So I have traveled my journey from a very conservative joint family setup to, so now in the beginning they all thought this fellow is gone crazy, like why is he doing like this? In the beginning they never understood me, and in the beginning everybody's upset with me, but now they think this is the right way, and now they replicate my friendship. So it is very important we convert all the relationships to friendships, and you need a lot of willpower. You need a lot of willpower, because some people, they have a lot of entanglements. We call it as enmeshed. Like the child is enmeshed with the mother or father or siblings. There is a lot of enmeshed nature will be there. So unless you change it into friendship, we cannot come out of that enmeshed bonding. And in that enmeshed nature, there is more bad karmas between those relationships. Okay, I'll give an example. The daughter is too much dependent on the mother, and the mother feels, yes, my daughter loves me so much. No, it's a karmic relationship. They both are entangled, and they both are creating more karma to each other. So to come out of all those entanglements, you have to have a very clear relationship with your own self. So then you can be a good friend to others. So that's why again I come back to the point. You have to reflect your relationships. Your relationships are the learning lessons. That's why there is also a question, during this Mauna, during the time of Mauna period, do you miss anybody in your family? If you are missing somebody in your family, then that is an entangled relationship. Because when you are in your inner journey, in the practice of Mauna, in the practice of intense meditation, you are missing somebody, that means you are entangled with that person. I showed this slide, right? Are you missing anybody? You see if there is any people attachments in your Mauna. Are you missing anybody? So that question is there, is to see with whom you are attached to. So there should be absolutely no attachments. There should be only friendship. Entanglements, attachments, these are all karmic. It leads to more suffering. This entanglement leads to suffering. If you want to come out of all the suffering, then you should change all the relationships into friendship. Now, I love my brothers, I love my sisters, I love my parents without any expectations, because there is only friendship. But before, I used to think I'm loving them, but there is always some expectations in return. So now the relationship is pure love without expectations. Pure love without expectations is equal to friendship. Okay. We'll take the next question. Yes, thank you, sir. Chat box में माही देखो तो Chat box में ऐसा कोई question नहीं है. Sir, there are hand raises, so should I take? Yes, go ahead. जो भी पूछेगा प्लीज टू द पॉइंट पूछिएगा. Shalini ji. Shalini ji. Okay. Sheetal ji. Ji, sir, I want to ask one question. Whether we should pray for others, and if we are praying for others, we will take their karma, like that karmic entanglement. You said in one of the session that we should not, that Reiki thing you said. So I just want to clarify exactly whether we should pray for our friends, whether we should pray for our blood relatives, whether we should pray for someone we don't know. That's fine. Prayer is nothing but good wishes, right? So prayer is nothing but good wishes. You want something good happen to them. That's fine. Okay. For yourself, it is meditation. For others, it is good wishes. So I won't use the word prayer, but I would rather use the word good wishes. Okay. So in your prayer, you are wishing something good for others. That is fine. That is not bad karma.
So, You should always wish well for others, for everybody. yes, sir. So chanting and meditating for that person for 1 hour or so, like that, I'm asking for to change their karma. No meditation for others. Meditation is only for yourself. Yes. Okay. So And no one chanting. more. Yes, sir. Yes, sir. So one more thing, sir. Just want to ask whether you said about twin flame and soulmate. How to know whether we are a soulmate or twin flame exactly? What will you do when you come to know? Your challenges will be the same. Your partner will be the same. What a big deal. Just because you know this twin flame, you will start loving more, is it? You will surrender more, is it? You will forgive more, is it? You tell me, what is the benefit if you know? Sir, actually, I'm separated from my husband. I said you earlier. So I want to know whether he was my soulmate or twin flame. Whether now after meditating. Okay. Now you have come to know. For example, you have come to know he is your twin flame. What will you do? Sir, I'll have a clue that whether we'll stay separated or that ways. You said twin flames are mostly separated. So what decision you will make? So just want to know like that. I want to tell you, these questions are all coming from the mind. Relationships are to deal with the heart. Relationships deals with heart chakra, right? So whether the person is a twin flame, whether the person is a soulmate, whether the person is karmic relationship, doesn't matter. What you feel in your heart, you do it. Don't let the labels affect you. Okay, sir. Whatever you feel in the heart, you do it. It doesn't matter. Sometimes, if you will have the reason I'm telling you is, if you have labels, then you will go through psychological suffering. You will go through, sometimes you go through abuse in relationships. And just imagine you have a label, my husband is my soulmate, and your husband is abusing you. And you will have this label in your mind, oh, he's my soulmate, he's my soulmate. So you will go through the abuse just because of that mind labels. So you should not be that. Just reflect on this moment to moment. Be practical, be very practical. Live moment by moment. That is very important. And if you are going through any abuse, you are equally responsible because you allow that abuse to happen in the first place. Any abuse, whether it is psychological abuse, physical abuse, any kind of abuse, if you are going through, you are equally responsible. So be practical. Spirituality is all about being practical. So be practical, be sensitive, and take the decisions according to your guidance of the heart. Don't go with the labels. Yes, sir. Thank you, sir. I hope I made this point clear, right? Yes, sir. Still have any more? Yes, sir. Still have all relationships are there to help us. But sometimes our relationship reaches a point where we feel like we cannot deal with them anymore. That is your free will. That is your free will. So don't make decisions out of certain understanding from outside your heart. Every decision should be based on your heart feelings. That is the bottom line. Okay. So that is very, very important. Whether you want to be with your husband or whether you don't want to be with your husband, everything, the decision should be based on the practical aspects of it and what is your inner guidance. That should be the only thing. Don't go with the labels. I have known people who have divorced their husbands because they think their twin flame is living somewhere else. And I have known people who have gone through emotional abuse because they think their partner is a twin flame. So this kind of suffering happens because of ignorance. So you should take away all the labels out. Okay. For a meditator, there is no labels from the mind. Always meditator is grounded. A meditator means who is very practical, who is very grounded, who can see the bigger picture, who can able to see the connects, and who will be able to see the bigger picture and take responsibility for life. Okay, so that is a master.
So we meditate to have a clarity of our life. So we need clarity in life, not labels. So the clarity always you get from the inner. Okay, so go with your inner. Navneet, you want to add something? No, very beautifully said, Pradeep. Uh, yes, relationships, we cannot use our mind. We have to use our heart. So whatever has happened. And with clarity, you'll know what to do. Yeah, Sheetalji. Thank you. Okay. Okay. So next, so you will take Mukesh. All right. So this final 3 people have raised their hand, so we will answer it and we'll finish this session. Okay. So final 3 questions. Yes, Mukesh ji. हाँ सर नमस्कार मेरी आवाज आ रही है Yes, sir. Very good. हाँ नमस्कार सर सर. हाँ बोलिए. मैं मुकेश जयपुर राजस्थान से मैं फर्स्ट टाइम 28 या 28 नवंबर 2019 को यहाँ पत्री सर से मिला था. वेयर आई एम लिविंग, यहाँ सम पीपल्स फ्रॉम PSSM जयपुर आए. उन्होंने कहा कि कुछ पत्री साहब आए हैं और यहाँ ध्यान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. जब तक हमने पत्री सर का नाम नहीं सुना था, ध्यान हम करते थे, तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए कि हमारी सोसाइटी में कौन लोग ध्यान करते हैं. सॉरी अगर थोड़ा सा मैं 2 मिनट अगर है तो एक्स्ट्रा ले सकता हूँ टाइम, अपने बारे में कुछ बताऊं. Come to the No, sir, point. just go with the straight, come to the point, sir. हाँ, यस, उसी पे आ रहा हूँ. मेरे मैं पिछले 2 मई से लगातार आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैंने फॉलो भी किया रिट्रीट कुछ समहाउ. तो मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा रिलेशनशिप के बारे में. उससे पहले मैं कुछ जरा कहना चाह रहा था कि जब मैं यहाँ पत्री सर से मिला तो उनके दो बार मिला मैं उनसे. हमारे यहाँ सोसाइटी में जब वो आए थे तो उनका आखिरी सब कुछ मिला के ही था कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे ध्यान में अपने आप मिल जाएंगे आनापाना सती में. ओके, नाउ आई कम टू द क्वेश्चन कि मैंने फिर उसके बाद PSSM को ज्वाइन किया. आपके यहाँ बहुत सारे मास्टर थे नॉर्थ में जो करा रहे थे. जब मैंने वहाँ देखा तो ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, एस्ट्रल को बुला रहे हैं, थर्ड आई है. तो मुझे लगा कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो रास्ते से भटक रहे हैं. एनी हाउ जब आपका सुना तो सारे जितने मेरे अंदर मन में क्वेश्चन थे अपने आप एक एक करके दूर होते गए और उसका लास्ट निचोड़ यही निकला कि डू मेडिटेशन एंड फॉरगेट एवरीथिंग. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि रिलेशनशिप के बारे में. एक बच्चा है, चाइल्ड के बारे में है कि एक फैमिली है जो born special child. One of my friend has daughter. She lives in Singapore. She has a special child of 9 or 10 years old. And she's, when a special child 9 years old, he cannot do anything. Neither he can eat, neither he can walk, neither he can talk. So it relates to karma, or how they will get rid of this problem. This is my question. Yes, sir, it is karmic. It is purely karmic, and they have to learn the lessons. Karma is not a punishment, so they have to focus on learning the lessons. Especially if you have a special child, it teaches you a lot of patience. It teaches you a lot of compassion, and that is the way to neutralize, to pay back the karmic things. So you have to accept it. When you take care without any complaints, just accept the situation. When you accept the situation, then you are paying back the karma. Okay, so accept the situation and do more meditation. There is no other way. No other way. There is no other way for anybody. It's not only for you. No other way. This is the way you deal with the karma. Unconditional acceptance. You accept unconditionally whatever the current challenge, whatever the current situation, you accept unconditionally and try to focus on the lessons to learn out of the situation. In any given situation, in any given challenge, we always can learn lessons. So focus on the lessons, accept it. That's it. Do more good karmas. Okay. Do more good karmas. When you start doing more good karmas, that also help you. Okay. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you. So for all the questions which are related to karma,
you have to understand every challenge in everybody's life is karmic. Every challenge in everybody's life is karmic. And how to deal with the karma? Very simple. Accept whatever is the challenge, accept it. Do more meditation, do more good karma. Only 3 things. That's it. That's the solution for everybody. Right. So next question. Kinari. Kinari Shah. Hello. Yes, go ahead, madam. Yeah. My question is to you and to Navneet as well. It is a bit tricky because it's a relationship question. My husband is just too good. So should I feel guilty? Like, you know, for example, I tell you, I'm calling from London. So at the moment, every day when Nitaji's meditation would start, and I like to do meditation with you. So when our group meditation would start, I finish all the, you know, cooking and everything before that, because it's around now at the moment, it is around 1:15. So I finish everything before 11 because it started, according to us, it is starting with at 11. So when my husband would come around 12 or something for the lunch and everything, he would prefer to eat lunch with me. But because I would be in meditation, he would just quietly eat and warm up his food, and then he would just, you know, go and back to his working from home. So at the moment, so we'll go. So sometimes I feel very guilty. So should I feel guilty, or it because for me, then I have to choose either I do meditation with you, or just, you know, allow him to just warm up his food and it is on his own without my company. Okay, madam, you don't need to go into the details. You can ask a generalized question. Okay, so no need to feel guilty. That's the simple answer. Okay. Because Next I have question. to choose. Yeah. Meditation is a gift you give to yourself. So take this gift for yourself. Doing meditation. Yeah, it's a wonderful All right. gift for yourself. Okay, thank you. Thank you. Okay, next, Aarti ji. नमस्ते सर, नवनीत मैम Yes, नमस्ते। मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये है सर कि यंग एज बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर पूरा टाइम अभी तो जैसे 1.5 साल से घर पे ही है, सब घर से हो रहा है, पूरा टाइम वो लोग टाइम पास करते हैं, मोबाइल पे फालतू वीडियोस देखते हैं, नो स्टडी, नो मेडिटेशन, नो रीडिंग बुक्स, नो एक्सरसाइज। तो हम इनसे, ये हमारे कर्मा है, हम इनसे क्या सीख रहे हैं, या हमने इनको कुछ कमेंट्स करना चाहिए, या हमने जाने देना चाहिए कि ये इनका देख लेंगे? You have children? आपका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है? Yeah. Okay. So what is your question? Your question is how to deal with them? Yeah. सर कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ही इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैं खुद को गिल्ट फील करती हूँ, खुद को ब्लेम करती हूँ। तो इनके साथ कैसे टैकल करें सर? See, you have to understand why you feel guilty. Why anybody should feel guilty? Guilt is like a poison to the soul. You understand? The more you feel guilty, the more you are destroying your own life. If you want a better life, then you should stop feeling guilty. Yes, you might have done mistake. That's so what? Everybody does mistakes, and everybody learn from their mistakes. No need to feel guilty. Past is past. What you can do today, focus on what you can do today. Forget about the past, whether you are a good mother, whether you did something good or not. Past is past. Forget it. Be on the present. What you can do this moment. This moment, you can be better. This moment, you can do something. This moment is in your hands. So focus on this moment, and you're already doing it. Meditate, read books, work on yourself, self-introspect. Be kind to yourself, be kind to others. Practice non-judgmental acceptance. These are the things you have to practice in the present moment. So practice it. You are in the right path. Finished. Okay, sir. So तो इन पे कुछ no going comments back नहीं, in the past. इनके साथ कुछ comments नहीं करना चाहिए. See, what can you comment? They are grown-up children. Their life, they have chosen you according to their soul plan. They have chosen you, knowing that this is the situation it's going to be. So you don't worry about others. You worry about yourself.
Okay, if they come and ask you for guidance, then you answer them, you suggest them, you ask them to do meditation. Okay, so once people are grown beyond your shoulders, you have to treat them as friends. You should practice non-interference. Don't interfere in their lives. But yes, if they come and ask you for suggestions, you please be there as a friend to give good suggestion. Like ask them to do more meditation. Ask them to be, when they do more meditation, they will be naturally positive. Whatever the pandemic it is, they will be positive. It is important. You have to remain positive. Meditation gives you that positiveness. So be practical. Focus on this moment. Okay, sir. You Sir, have एक to बात you have to stop thinking as a mother. Start thinking as a friend. ओके सर। सर एक बात और, अभी टाइम एडजस्ट हो रहा है तो जरा 4-5 घंटे मेडिटेशन करना हो रहा है मेरा, तो मेरी बेटी में से बहुत नाराज रहती है, बोलती है आप दिन भर यही करते हो, आप फिर बाहर चले जाओ, घर में रहने की जरूरत ही क्या है, बात नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो कैसे करें सर? What, your children are complaining because you are doing more meditation? Yeah, sir. Then you are doing wrong. You are doing wrong. आप गलती कर रहे हैं. You should be in the middle path. You do 1 hour meditation or 2 hours meditation for yourself. You reduce your sleep and do meditation, and you have to be there as a mother for your children. Then you are not doing the dharma of being a mother. Your daughter needs you. So you have to give some time to your daughter. You have to do your dharma, everybody has to do their dharma. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. In the name of meditation, you cannot escape your responsibilities. You reduce your sleep and do meditation. Who asked you to do 4 hours meditation? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Nandiji, you are very sweet. I like your smile very much. Oh, Very much. Thank you, Aarti ji. See, this is something very, very important. You should not miss. Nobody should miss their dharmas. In the name of meditation, nobody should miss your dharmas. You have a dharma as a wife. You have a dharma as a mother. You treat your children as friends, but your dharma as a mother remains until they become independent. Okay. Until they become independent, they might need some emotional support. So you be available to them. Okay. Treat them as friends, but do your duty. As a mother, you have a duty. As a wife, you have duty. As a daughter, you have duty. So fulfill your duties and then do meditation. Just because you are doing meditation, you cannot avoid your responsibilities. Sir, but If you want to do more meditation, नहीं yes. सर, ऐसा लगता है कि अभी आफ्टर 55 मेडिटेशन में हम आए हैं, तो अब हमारे पास टाइम ही कम बचा है, तो जितना हम कर सकते हैं करें, इसलिए सर ज्यादा करते हैं. No, you do more, no problem. You do more by reducing the sleep, but not avoiding the responsibilities of the family. सर मेडिटेशन करने से स्लीप तो वैसे ही कम हो गई है, 2-3 घंटे ही होती है, पर फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ, इसलिए वो लोग थोड़े नाराज है. Yes. So you communicate with your children, you communicate with your family members. It is very important. In every relationship, communication is very important. So you communicate with your children that I want to meditate from this time to this time, and the rest of the time I'm available to you. Let us have family time. So there should be a proper communication. Then everybody will support you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. हेलो हेलो. हाँ रजनी, बोलो, आवाज आ रही है? Yes, madam, go ahead. हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. रजनी जी बोलिए, सुनाई दे रहा है हम लोग को. सर आवाज आ रही है? Yes, madam, go ahead. I think she cannot hear us. Yes. All right. Okay. हेलो. बोलिए रजनी जी. हेलो. हाँ रजनी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं. क्या आप हमको सुन पा रही हो? आप बोलिए आगे. नहीं, पण आपले जवळ जवळचे असले
Oh, fine. I think she has some issues with the network. Okay. So, Hello. so finally, yes, Shalini. Hello, sir. Thank you for giving me a chance. My question is there any good type of ego? I watched the video on ego. I understood is pride and arrogance. So is there any good example of a good version of an ego? Yes, Navneet will take this question, final question. So ego is needed at the beginning. Before meditation journey, we all have ego. So ego is important for, feeling good, confident about ourselves. But once we start meditation journey, ego is no more needed. Right? Ego, you are correct. You said it leads to arrogance, ignorance. It leads to arrogance and ignorance when a person is very attached to the ego. Then it leads to arrogance and ignorance. But having a healthy self-esteem means you are in middle path. Ego is not disturbing you. Ego disturbs a person if they have attachment to it. Then it leads to arrogance and ignorance. But when you do a lot of meditation, the ego dissolves. You no more identify yourself as your race, your country, your occupation, your profession, your gender. All these identities go away. So ego gets dissolved with meditation. So to answer your question, yes, at the beginning, ego is there for everybody. Having a healthy ego means not having a strong attachment to ego, but just feeling confident about yourself. So their self-confidence is important. All children have ego, right? They feel confident about themselves. Then as they grow older, they get mind conditioning, and then the ego starts to influence. The ego takes over, then it influences their life decisions. Then they go in the wrong path, right? But otherwise, you look at small children, they start to develop healthy egos. We can learn from children. So yeah, that's the example we can see in the society. Okay. If ego is a feeling, so if I feel unworthy, is that also a type of ego? Yeah, that comes because you feel you have this image of yourself, and you feel that this image about yourself is not good. Like I'm not good enough. I'm not a good mother. I'm not a good wife. All this is negative aspects of ego. It's like low self-esteem, Okay. inferiority complex. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Hello. Yes, Rajani ji, you can speak. We can hear you. Sir, my question is that how can I send affirmations to overcome my health issues, to my professional issues and personal relationship issues? Okay. Navneet ji will answer. You're asking about affirmations. Yeah. Why you need affirmations? To sort out some issues. You think affirmations will help you? I think. You believe in affirmations? Yeah. What else you believe? Do you believe in meditation? I believe in meditation. Okay, so you believe affirmations will help you come out of your problems? Yeah. Okay. Okay, so what you believe is what you will create. No? Your reality comes from your thinking. So if you believe affirmations will help you, then you do affirmations. I don't do affirmations because I believe meditation will help me. I want my meditation to help me. So I don't do affirmations, I do meditation. But if you want to do affirmations, you can do affirmations before sleep in the morning. When you wake up in the morning, first thing you do the affirmations. Before sleep at night, just before going to bed, then you do the affirmations. Speak one affirmation 3 times before sleep, then 3 times again when you wake up. Those are best times to do affirmation because that time mind is empty. So the affirmation goes deep into your subconscious, right? So if you believe affirmations will work, you can experiment that affirmations and all the best to you.
Thank you, ma'am. Thank you. Yes, so just to add on top of it, affirmations helps you on a superficial level, but if you want to come out of the issue, if you want a permanent solution, you want transformation, then meditation is the only way. Because the more you meditate, the more you go into the root cause of the issues and more the transformation happens. Affirmations is just like a superfix, just it's like a band-aid, right? So if there is any issues, you focus only on you focus only on the superficial. Affirmations focus only on the superficial. Okay, for example, okay, I want good health, I want prosperity, I want this, I want abundance, so these are superficial. But in meditation, you go to the root of it. And this in meditation it is like this. I can give you an example. Affirmation is more of for non-meditators to remain positive. But once you know how to do meditation, then the role of affirmation is very minimum. It is like this. We have moon and we have sun. We get light from the moon only when sun is not there. In the night, you get the moonlight. In the night, yes, you get the moonlight. But in the daytime, the moon is there, but you don't get the moonlight. You get the sunlight because sun is more powerful than the moon. So when sun is there, moon has no role to play. In the absence of sun, yes, moon has some light. It is the same. Affirmations are moonlight. Meditation is sunlight. So you decide what you want in your life. Okay, sir. Nice explanation, sir. Thank you, sir. Yes, ma'am. Okay, friends. I think on this note, we will say goodbye to you. Thank you, Navneet. We will see you tomorrow. Goodbye for today. Thank you, Okay? everybody. Thank you, Navneet ji. Thank you very much. Thank you. Very much. Thank you, everyone. Thanks a lot, A virtual Navneet ji. hug. God bless you. A virtual hug. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. Bye-bye. Bye-bye. वहीं और कोई क्वेश्चंस नहीं थे? एक दो क्वेश्चंस थे चैट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगी बाद में। अरे तो पूछना था ना, आज सर चले गए तो थोड़ा पूछते थे। वो काम किए नहीं थे ना, इसीलिए बता रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है ना। तो अब मैंने ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बैलेंस किया जाए। तो सर ने कहा था कि एक मिनट, सर ने कहा था कि आपको मिडिल पाथ ही लेना है। मैंने अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मैं उस समय सुन रही थी कि एक मिनट मुझे टाइम दो। कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके साथ मैच नहीं करते हैं, वो दूर चले जाएंगे। जो मैच करते हैं वो पास रहेंगे, पर आपके जो क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं उनके साथ आपको कोई भी गिल्ट, कोई भी इरिटेशन बनाकर नहीं रखना है। अपने एक मिनट यार, अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ आपको कम्युनिकेट करके अपने फीलिंग को शेयर करना है। और ये नवनीत जी ने बताया था और उन्होंने कहा था करके कि आप हक करके आप अपने प्रॉब्लम्स या अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। और सर ने और उसके ऊपर बताया था कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप स्पेशल हैं, आप परफेक्ट हैं, सामने वाला परफेक्ट नहीं है। आपके रिलेशनशिप आपके मिरर रिफ्लेक्शन है। अगर आप दोनों मतलब सामने वाला ज्यादा मेडिटेशन कर रहा है तो आपको ज्यादा समझेगा, अगर वो कम मेडिटेशन कर रहा है तो आपको कम समझेगा। और प्रदीप सर अपने बारे में बता रहे थे कि वो बहुत मेडिटेशन करते थे और करते हैं और उनको भी कई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए हैं।
और जितना आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उतनी ही आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं वो आपके सेलिब्रेट करने के लिए हैं, आपके ग्रोथ के लिए हैं। और जिन लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनकी लाइफ में कम चैलेंजेस आते हैं। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं तो आप अपने आत्मिक विकास की प्रगति को बहुत तेज गति देते हैं, फास्ट ट्रैक में दौड़ते हैं, तब आपके बहुत बहुत सारे कर्मास बर्न होते जाते हैं। तेजी से कर्मा जब बर्न होते हैं तो उतने ही तेजी से आपके सामने चैलेंजेस आते जाते हैं, और आपको बिल्कुल भी डिप्रेस्ड या दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी आपके लाइफ में चैलेंज है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन पार्टनर, जब एक पार्टनर कम मेडिटेशन करता है तो वो ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो दूसरे को बैलेंस नहीं करता। पर जब दोनों पार्टनर अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, दोनों ही ऊपर रहते हैं, तब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रियलिटी चेक कराता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर एक पार्टनर जरा से भी गलती कर रहा है तो दूसरा जो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कर रहा है वो उसको रियलिटी चेक कराएगा। और जब प्यार करते हैं तो वहां पर हमको, यहाँ पे जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और जब बहुत प्यार करते हैं तो हमको नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस करना है। यही सबसे मेन चीज है जो हमारी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करता है। जितना आप अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस करते जाएंगे, उतना ही आप एक रियल मास्टर बनते जाएंगे। जब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे बिना जज के, तो वो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको सुनना भी पसंद कर लें और पसंद करें, और धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट भी करें। आप जो देते हैं वही पाते हैं। आगे पीछे सूनर और लेटर आपको मिल ही जाता है, तो आपको पेशेंस रखना है। बुद्धा, जीसस, गांधी, सभी लोगों ने यही नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस के बारे में कहा था। और ये आपको तभी आएगा जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करेंगे। तो एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, ये एक अच्छे मास्टर के साइन है। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए पूछा था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं भाई, बहुत बहुत करते हैं। मुझे एक गिल्ट होता है कि मैं कभी कभी बहुत एक्सट्रीम में चली जाती हूँ। शायद मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जितना उनको टाइम चाहिए मैं नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे को 12 से 3 बजे के बीच में फोन किया करिए। माई हंस रही, क्योंकि वो मुझे जानती है कि मैं कितना बिजी हो जाती हूँ आप लोग के चैट में आंसर देते हुए। तो कभी कभी उनकी नाराजगी भी मुझे सहनी पड़ती है, और कभी कभी मुझे अपने आप पे भी बहुत गिल्ट होती है कि मैं शायद अपना धर्म नहीं निभा रही। तो मैं जो तराजू में बैठी हूँ उसमें बहुत मुश्किल होता है मुझे संसार में निर्वाण प्राप्त करना, बट आई विल डू। एक ने, आप सर ने अपना ही एग्जांपल देते हुए बताया था कि मेरे फादर बिल्कुल मटेरियलिस्टिक थे, वो मेडिटेशन नहीं करते थे, तो वो मेरे ग्रेट टीचर साबित हुए। वो मेरे सारे वीकनेस को रिफ्लेक्ट करते थे। पहले तो मैं शुरू में बहुत इरिटेट होता था, पर जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करते गया और मैं उनको एक्सेप्ट करता गया बिना कोई जजमेंट के, तब मुझे मालूम चला कि वो जो मुझे मिरर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लिए अच्छी चीज है। नवनीत और मेरे में भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े और वगैरह हुए हैं, पर हम दोनों में से एक को सरेंडर करना ही पड़ता है। जब दोनों पार्टनर में कोई सरेंडर नहीं करेगा तो वो फिर रिश्ते और खराब हो जाते हैं। तो जो पहले सरेंडर करता है वो पहले ईगो को छोड़ता है। तो अपने ईगो को चेक करिए, और ये जो वीक ईगो है, अहंकार है, वो वेजिटेटिव है, मतलब लगातार बढ़ते रहता है। तो आपको चेक करते जाना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डील करने में आपके इस सरेंडर का काम बहुत आएगा। तो जो भी आपके आसपास के रिलेशनशिप हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। ये आपके बेंचमार्क हैं एनलाइटनमेंट के लिए। तो कुछ लोग आप कुछ लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपकी शांति को भंग करते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी शांति को बनाए रखें। आप इसके लिए थोड़ा सा समय लेंगे, और आप समझ लीजिए कि आप अगर सामने वाला परफेक्ट नहीं है तो आप भी परफेक्ट नहीं है, दोनों इम्परफेक्ट हैं।
तो जब सर ने कहा कि मेरे पापा मुझे मेरी वीकनेस को रिफ्लेक्ट करते थे, तो तुरंत मेरे भी माइंड में क्लिक हुआ कि जब भी मैं एक्सट्रीम में जाती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे थोड़ा नाराज हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल मेरी वीकनेस को, मेरी गलती को रिफ्लेक्ट करते हैं, मुझे रिमाइंड कराते हैं कि मिडिल पाथ में नीता तुम नहीं हो। तो वो मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको। तो मुझे देखिए, हम पढ़ते बहुत बुक्स हैं, समझते भी बहुत कुछ है, पर तभी भी हमको कभी कभी कुछ मास्टर्स की बातें एनलाइटन करती हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ माही, तुमको याद आएगा तो बताना। तो सही में कई बार मैंने लिखा है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके शायद पूछे थे उन्होंने, तो उसने कहा था कि आपको अपने डिसीजन अपने जजमेंट के थ्रू नहीं लेना है, आपको अपने जो हार्ट आपका बोल रहा है उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपके जो क्लोज रिलेशनशिप है आपके मिरर को, आपके आईने को रिफ्लेक्ट करते हैं। खासकर जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तब तो ये मिरर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन ये था कि मुझे पता करना है कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं मेरे। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। आपकी सबसे अच्छी लर्निंग आपकी साथ रहने में ही है, अनकंडीशनल सरेंडर ही करना है। और आप कभी भी मत सोचिए कि मैं सेंसिटिव हूँ, सामने वाला नहीं है। शायद ये मुझे ही बता रहे थे, मैंने तभी कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि जब मैंने कहा था कि मैं सरेंडर करती हूँ हमेशा, तब मुझे ही सर समझा रहे थे कि सबको लगता है कि मैं ही सेंसिटिव हूँ, मैं ही समर्पण करती हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है। यस, सर ने कहा था कि ये इस समय तुम नीता जजमेंट कर रही हो अपने हस्बैंड को कि तुम ही सरेंडर करती हो, तो ये हमारे मिरर रिफ्लेक्शन है हमारे हस्बैंड वाइफ। और बिल्कुल भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो सामने वाला भी ऑनेस्ट होएगा, और साथ रहने पे ही एक दूसरे की ग्रोथ है। अनकंडीशनल सरेंडर आपको करना ही है, और सिर्फ मैं ही सेंसिटिव हूँ ऐसा सोचना पागलपन। तो चैलेंजेस फॉर ग्रोथ, मतलब चैलेंजेस हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। एक ने माही ने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि एक लड़की जो बचपन में उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, अब उसको पार्टीज वगैरह में जाने में बहुत हिचक महसूस होती है, वो इन सब से छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि उसका सेल्फ स्टीम कम हो गया है। वो मेडिटेशन कर रही है, वो मैरिड है, पर उससे अब ये कैसे निजात पाए, क्योंकि सेक्सुअली अब्यूज होने के बाद चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे जो मैंने प्रदीप सर का ही एक सुना था कर्म सिद्धांत में कि अगर आप सेक्सुअली अब्यूज होते हैं तो आपके सारे चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड था। तो सर नवनीत मैडम ने कहा था कि ये सेक्सुअली अब्यूज होने से मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली आप हर्ट होते हैं। आपको अपने प्रति करुणा रखनी चाहिए, अपने प्रति नरम भाव रखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। मेडिटेशन में आपको सारे आंसर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप अपने आप को, अपने आप की को रिस्पेक्ट करिए, अपनी सेल्फ डिग्निटी को बना के रखिए, और अपनी शेम एनर्जी को दूर करिए। और शेम एनर्जी आपकी तभी दूर होगी जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे। आप मौना भी करिए मेडिटेशन के साथ साथ, क्योंकि मौना रखने से हमारे इमोशंस सरफेस पे आते हैं, हमको पता चलता है कि हमारे में क्या चल रहा है। तो मौना, साइलेंस के समय आप आपके इमोशंस बाहर आएंगे, आप उसको रिलीज करिए। और जब मौना रखेंगे तब आपको सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो आपकी हीलिंग में आपको मदद करेगी। और ये जो आपकी हीलिंग होगी उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हील होने के लिए टाइम लगता है। किसी ने अपने बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं बचपन में थी तो मैं दूसरों की बीमारियां ले लेती थी, फिर मेरी मदर को भी क्रॉनिक डिप्रेशन हुआ, तभी भी मैं उनकी बीमारी ले ली। शायद वो काफी इमोशनली वीक है, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मैं ये मेरा कर्मा है? तो अ, अ, नवनीत मैम ने कहा कि बिल्कुल ये कर्मा है, क्योंकि आप थॉट्स के द्वारा भी, कर्मा क्या होता है, हम मन कर्म वाणी के द्वारा जो भी
हार्म करते हैं या किसी से अटैच होते हैं, तब भी हम कर्मा क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपने ऐसे थॉट्स आपने कैरी किए हैं तो आपको वो डिजीज ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इसके लिए कोई मैजिकल फॉर्मूला मैं नहीं दे सकती, पर आप मेडिटेशन करिए और किसी के साथ भी इमोशनली एंटेंगल मत होइए। आप सत्संग करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग हो और किसी के साथ एंटेंगल कभी भी ना हो। फिर माही ने क्वेश्चन पूछा था कि बाइबल में जीसस ने कहा है कि तुम्हें जो भी मिले तुम खा लो, तो कहीं पे भी तो उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में नहीं कहा है। तो मेडिटेशन, तो सर ने कहा कि मेडिटेशन के बगैर जीसस तो क्या किसी भी बुद्ध पुरुष को समझना असंभव है। आप जब तक के खुद एनलाइटन नहीं होंगे, आप कैसे किसी बुद्ध पुरुष को समझोगे। अगर क्रिकेट के बारे में भी जानना है, क्रिकेट जब तक के नहीं सीखोगे तब तक के सचिन को या कपिल देव अगर को नहीं समझ पाओगे, तो आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। और बाइबल में जो भी कहा गया है वो बहुत ही गलत समझा गया है। बाइबल में कहा गया है कि किसी को भी आप मत मारिए, दाउ शेल नॉट किल, किसी को भी मत मारिए, अपने आप को प्यार करिए और अपने नेबर्स को उसके बाद प्यार करिए। तो जीसस ने जो नेबर्स कहा है, नेबर्स का मतलब हमारे पड़ोस में रहने वाले ह्यूमन ही नहीं, हमारे पड़ोस में रहने वाले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी के लिए कहा गया है। पर और आप खुद भी देखिए कि जीसस के हाथ में हमेशा एक छोटा सा बकरी का बच्चा रहता था। तो जब वो खुद ही सिंबॉलिक तरीके से बता रहे हैं कि सभी से प्यार करो, तो वो कैसे कह सकते हैं कि नॉनवेज खाओ। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बात है। और जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के हमको पेश किया गया है। जब भी जीवित मास्टर रहता है तब उसके फॉलोवर उसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, पर जब मास्टर की डेथ हो जाती है तब उसको बहुत ही गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के उसकी शिक्षाओं को का प्रचार किया जाता है। बाइबल तब तक के नहीं लिखी गई थी जब तक के जीसस थे। बाइबल उनके जाने के बाद लिखी गई, तो उसके उनकी टीचिंग्स को भी काफी तोड़ा मरोड़ा गया। उन्होंने कहा है कि कतार एक कम्युनिटी है, शायद उन्होंने कहा था कि जो जीसस के ट्रू फॉलोअर्स हैं वो वेजिटेरियन है, मेडिटेशन करते हैं और बिल्कुल अहिंसा को फॉलो करते हैं। और कई लोग तो उनको उनका मर्डर भी कर देते हैं, शायद रोमन्स करके कहा था। तो कतार लोगों को मार दिए जाते हैं क्योंकि वो जीसस को फॉलो करते हैं। तो जीसस की टीचिंग गलत समझी गई है। और अगर आपको जीसस की टीचिंग को समझना है कि उनकी शिक्षाएं क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करना पड़ेगा। फिर जीसस का एक एक स्टेटमेंट आपके लिए माइलस्टोन बन जाएगा। ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ। उन्होंने माही इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? टिप्स ऑन पेरेंटिंग। यस यस, पीए लिखी थी ना। उन्होंने कहा है कि पेरेंटिंग के ऊपर टिप्स देने के लिए कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करिए। वो 2012 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत ही विजडम लेके आए हैं, और आप उनको बहुत ज्यादा मेडिटेशन के करने के बाद ही आप उनको हैंडल कर सकती हैं। वो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और आप बच्चों को नहीं सिखा सकती। आप जब उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगी, उनको रिस्पेक्ट करेंगी, तो वो आपके साथ अच्छे से रिलेशन बना पाएंगे। जो न्यूली बॉर्न है, वो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको आप झूठी कहानियों से फुसला नहीं सकते, जैसे पहले जमाने में हमारी मम्मी पापा लोगों ने किए थे। आज के बच्चे ट्रुथ सुनना चाहते हैं और आपको बोलना ही पड़ेगा सत्य, आपको ऑथेंटिक ही होना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है कि आप ऑथेंटिक बन के उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करें और रिस्पेक्ट करें। नवनीत जी ने कहा कि आपको नए बच्चे जो 2012 के बाद पैदा हो रहे हैं उनको लॉट्स एंड लॉट्स, मतलब बहुत ज्यादा प्यार और अफेक्शन की जरूरत है। आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार और हक के द्वारा अपने प्यार का इजहार करके बनाइए। फिर मैंने ही क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत ही मुश्किल होता है उनके साथ डील करना। सॉरी, इसी में ही पेरेंटिंग में ही सर ने एक और ऐड किया था सेंटेंस कि हमको अब
सीखना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्री से और एनिमल से, बर्ड से, कि किस तरीके से फ्रेंडशिप की जाए। सिर्फ एक ह्यूमन किंगडम ही है जो अपने से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको लगता है कि हमारे बच्चे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी माँ को अपना बेटा बच्चा ही लगता है। तो अब जब बच्चा बड़ा हो गया है, मान लो 50 साल का हो गया है, 80 साल की मदर हो गई है, तो उसको वैसा ट्रीट नहीं करे जैसे वो बचपन में करती थी उसको। अब उसको एक फ्रेंड के रूप में उसको ट्रीट करना है। और हमको यही सीखना है कि हर रिलेशनशिप को अपने फ्रेंडशिप में बदलना है। और हमको ये कहाँ से शुरू करना है? अभी से ही हमको शुरू करना है, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। प्रदीप सर ने कहा है कि मैं 26 लोगों की एक फैमिली में रहता था। मुझे अगर एक जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड अंकल वगैरह सब रहते थे, तो जब मुझे एक मूवी भी जाना रहता था तो मुझे सभी लोगों से परमिशन लेना पड़ता था, और तब तक के मूवी चालू हो जाती थी। मेरी मदर आज फ्रेंड है, मेरे सिस्टर ब्रदर सब फ्रेंड हैं। और ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड हैं तो उनसे मेरा प्यार कम हो गया, मेरा प्यार उनसे अभी भी वैसा ही बरकरार है। तो आप अपने प्रति काइंड बनिए, तभी आप दूसरों के साथ भी काइंड बनेंगे। और रिलेशनशिप आपकी अपने साथ कैसी है, वहां आपको शुरुआत करनी है। जैसे आपकी अपने साथ रिलेशनशिप रहेगी, अपना संबंध रहेगा, वही एक्सटेंड होके, वही विस्तार रूप से आप बाहर अपने रिलेशन में रिफ्लेक्ट करते हैं। और तब एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं होगा, रियल ऑथेंटिक आपका होगा, और आप अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे। एक ने क्वेश्चन पूछा था, बच्चे का कुछ क्वेश्चन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे इंडिया में खासकर सबसे ज्यादा एनमेश्ड का मतलब क्या होता है? माही, एंटेंगल होता है क्या? एनमेश्ड मतलब जाल में, हाँ जी। है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोगों के पास कम विल पावर रहती है, मतलब जब हमारे पास इच्छा शक्ति कम रहती है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ एनमैच्ड हो जाते हैं, मतलब उनके इमोशनली उनके साथ डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वही हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और बैड कर्मास भी हमारे बनाता है। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था कि एक बेटी अगर माँ पर निर्भर है, तो माँ बहुत खुश होती है कि बेटी मेरे ऊपर निर्भर है, मुझे बहुत प्यार करती है। पर ये एक कार्मिक एंटेंगलमेंट है, इसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये रिश्ता फिर कार्मिक रिपीटेशन को करेगा। तो रिश्ते तभी होने चाहिए जो फ्रेंडशिप के रूप में हो, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को मोना के जब मोना रख रहे थे, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जरूर लिखिएगा कि आप किसको मिस कर रहे हैं। जिसको भी आप मिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी भी उससे अटैच हैं। तो जिससे भी अटैच हैं वो आपको याद आते रहेंगे, और आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे किससे डिटैच होना है। वो आपका काम है, उनसे डिटैच होना। तो नो अटैचमेंट, नो एंटेंगल। और रिलेशनशिप बनानी है फ्रेंडशिप के रूप में, तभी आपकी सफरिंग कम होगी। इस फ्रेंडशिप मतलब रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करने में आपका प्यार कम नहीं होगा, पर आपके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्योर लव तभी होता है जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, और इसी को फ्रेंडशिप कहा जाता है। एक ने कहा था कि मैं दूसरों के लिए अगर प्रार्थना करूं तो क्या मैं उनके कर्मा लूंगी? और कई बार तो हम उनके लिए भी प्रे करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। तो सर ने कहा कि प्रेयर दूसरों के लिए करना अर्थात गुड विशेस देना है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और तुम इसको प्रेयर मत वर्ड यूज करो, तुम इसको गुड विशेस यूज करो अगर आप मेडिटेशन कर रही हो तो। पर आप दूसरों के लिए गुड विशेस करिए, अच्छी बात है, पर मेडिटेशन सिर्फ आपको अपने लिए करना है। फिर उन्हीं लेडी ने पूछा था कि मुझे कैसे मालूम चले कि मेरा हस्बैंड सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। तो सर ने कहा था कि आपको उस लेवल से क्या करना है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। आपका पार्टनर तो वही का वही रहेगा, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जानकर कि वो क्या है। आपको अपने स्पाउस के साथ कैसे डील करना है, वो आपको लेबल के द्वारा नहीं बल्कि अपने दिल के द्वारा आपको फॉलो करना है कि क्या मैं कैसे मैं उसके साथ डील करूं। लेबल सिर्फ हमारे को
साइकोलॉजिकली सफरिंग ज्यादा देते हैं। मतलब अगर आपको मालूम चल जाएगा कि ये लेबल हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो उससे आपको साइकोलॉजिकली सफरिंग होएगी। उससे अच्छा है कि आप वर्तमान में रहिए, एक एक मिनट, एक एक क्षण को आप जी लीजिए। और यदि आपके लाइफ में कोई भी प्रकार का अब्यूज है, चाहे फिजिकली, इमोशनली, जो भी है, तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बात को आप बार बार समझिए कि वो मिरर रिफ्लेक्शन है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपनी गाइडेंस अपने दिल को फॉलो करके करिए। सभी रिश्ते हमारे इवोल्यूशन के लिए होते हैं। ये हमारे पास फ्री विल है कि हम खुद अपने हृदय से निर्णय लें कि हमको उसके साथ रहना है या उसके साथ अलग होके अपनी लाइफ को बिताना है। प्रदीप सर ने कहा कि कई लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसलिए डिवोर्स लिया क्योंकि उनको लगता था कि उनका ट्विन फ्लेम कहीं और रहता है। कई लोगों ने इसलिए डिवोर्स लिया क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका स्पाउस है वो ट्विन फ्लेम है। तो ये सब लेबलिंग की बातें हमें सब छोड़ देनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ग्राउंडेड रहिए, अपने लाइफ की बिगर पिक्चर को देखिए, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए और लेबल्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अपने इनर गाइडेंस की आवाज को सुनिए। और रिश्तों को जब निभाना होता है तब मन को यूज नहीं करना चाहिए, केवल दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। एक ने कहा था कि बच्चा एक स्पेशल है, 9-10 साल का है, सिंगापुर में रहता है, तो क्या ये कार्मिक है? तो सर ने कहा बिल्कुल ये कार्मिक है, और उनको कुछ लेसन लर्न करना है, क्योंकि कर्मा का अर्थ कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ लेसन लर्न करना है। हो सकता है कि एक्सेप्ट करना है उसको विदाउट कोई कंप्लेन किए हुए, कंपैशन के साथ उसकी सेवा करनी है। और उसका ये सब चीजें जब वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंपैशन के साथ करेंगे और बिना कोई कंप्लेन के करेंगे, तो वो अपने जो कर्मा थे उनके, वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए सर ने कहा था कि उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। हमारी लाइफ का हर चैलेंज कार्मिक होता है। उसके 3 मेन पॉइंट बताए हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, दूसरा ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा गुड कर्मा। एक ने कहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, पर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो उनके साथ बैठ के लंच नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ही गिल्ट फील होती है, क्या मैं स्वार्थी तो नहीं हो गई हूँ? ये अक्सर वाइफ लोगों को होता है। वो अकेले खाकर चले जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैडम ने और सर ने कहा कि कोई भी गिल्टी नहीं रखनी चाहिए। मेडिटेशन आपको गिफ्ट मिला है, आप उसको एंजॉय करिए और गिल्ट मत पालिए। अगर बच्चे, एक ने, आरती जी ने पूछा था कि बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण, और मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, पूरे टाइम मोबाइल्स में और इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या ये मेरे कर्मा है? मुझे उनको ऐसे देखना भी नहीं पसंद आता, पर मुझे टोकना भी समझ में नहीं आता कि टोकूं कि नहीं टोकूं, कहीं कर्मा तो नहीं क्रिएट करूंगी, तो मैं इनको कैसे टैकल करूं? और मुझे ये गिल्ट होती है कि क्या शायद मैंने ही बच्चों की परवरिश गलत की है। तो सर ने कहा कि आपने अगर गलती भी करी है तो उसका पास्ट इज पास्ट, मतलब अतीत चला गया, उसके लिए आप कोई गिल्ट मत पालिए। गिल्ट पालना एक पॉइजन के समान है। अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आप भूल जाइए कि आपने क्या किया था। अब बेहतर आप क्या कर सकती हैं उनके लिए, और आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन करिए और उनको नॉन जजमेंटल एक्सेप्ट करिए। बस आपका इतना ही काम है। वो अब बड़े हो गए हैं, वो बच्चों ने आपको एक मदर के रूप में चुना है, तो उनको अपना काम करने दीजिए। आप उनके कोई भी काम में आप इंटरफेयर मत करिए, पर यदि वो आपके पास आके पूछते हैं तो आप बिल्कुल उनको प्रेम पूर्वक एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए, मेडिटेशन सिखाइए, और उस अपने बच्चों को एक फ्रेंड के समान बिहेव करिए। नॉन इंटरफियरेंस हर पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और आप पॉजिटिव रहिए, उनके साथ जो भी होने वाला है उसके प्रति पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए और प्रैक्टिकल रहिए। आपको एक फ्रेंड के रूप में ही सोचना है बच्चों और फिर उसने आगे पूछा था कि जब मैं ज्यादा मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी बेटी नाराज हो जाती है कि मैं ज्यादा मेडिटेशन कर रही हूँ, घर छोड़ के चले जाओ, तो मैं क्या करूँ? तो सर ने कहा कि
आप मिडिल पाथ को चुनिए, आप अपने मेडिटेशन के लिए बिल्कुल समय निकालिए, पर हो सके तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये वो आपका धर्म है कि आप जो बच्ची बड़ी हो रही है उसके साथ आप टाइम दीजिए। मेडिटेशन के नाम पर हमको अपने कर्तव्यों को छोड़कर भागना नहीं है। आपको, आपका धर्म है कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का की भूमिका के साथ पूरी तरीके से जस्टिफाई करें। जब तक के बच्चे इंडिपेंडेंट न बन जाएं, तब तक के आपको उनका फ्रेंड बन के उनको टाइम देना है। और यदि आपको ज्यादा मेडिटेशन करने का मन है तो आप अपनी नींद को कम करके मेडिटेशन ज्यादा करिए, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। आप उनसे कम्युनिकेट करिए कि मैं इतने इतने टाइम मेडिटेशन करूंगी क्योंकि मुझे इससे शांति मिलती है और बाकी समय मैं आपके साथ रहूंगी। तो जब अच्छे से बच्चों और आपके बीच में संवाद होगा तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपको अपने मन का करने देंगे। एक ने कहा था कि अहंकार का एक अच्छा टाइप भी होता है क्या? क्योंकि मैंने प्राइड और एरोगेंस के बारे में बहुत सुना है। तो नवनीत जी ने कहा कि बिल्कुल शुरुआत में ईगो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका अहंकार आपको कॉन्फिडेंट और सफल बनाने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा शुरू करने के बाद आपको, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी करने के बाद आपको बिल्कुल भी ईगो की जरूरत नहीं होती। तब आपका एरोगेंस इग्नोरेंस होता है, मतलब तब आपका अहंकार अज्ञानता बन जाता है, क्योंकि आप स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं अपनी उस इमेज के साथ जिसको आपने बना कर रखा है। तो आपको मिडिल पाथ लेना है। आपको एरोगेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, अहंकार से दूर रहना है, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप किस देश के हैं, आप किस जाति के हैं, किस पद प्रतिष्ठा में हैं, कितने पैसे वाले हैं, ये सभी आइडेंटिटी जरूरी है शुरुआती समय के लिए। और हम बच्चे को भी कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अगर बच्चे को भी ईगो हो रहा है तो बिल्कुल उनको होना चाहिए, क्योंकि तभी वो कॉन्फिडेंट होंगे और आगे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। पर आगे उनको समझाना है कि आगे चल के आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान से अटैचमेंट नहीं रखना है। ये आपके लिए पॉइजन की तरीके से और प्रॉब्लम की तरीके से हो जाएगा। और एफर्मेशन के लिए एक लेडी ने पूछा था कि मैं कब करूं ताकि मेरे रिलेशन, हेल्थ और दूसरे इश्यूज अच्छे हो जाएं। तो नवनीत मैम ने कहा था कि आपको एफर्मेशन की जरूरत क्यों है, और उसने कहा था मुझे सब चीजें, इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एफर्मेशन पे बिलीव है तो आप बिल्कुल एफर्मेशन करिए, क्योंकि जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, वैसे ही हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपका एफर्मेशन में है बिलीव, तो आप रात को सोने के समय 3 बार बोलिए, उठते साथ ही आप 3 बार बोलिए, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जो एफर्मेशन के लिए बेस्ट टाइम रहता है। उस समय आपका माइंड एम्प्टी रहता है। पर चूंकि मुझे मेडिटेशन में बिलीव है तो मैं कभी भी एफर्मेशन को नहीं बोलती, और एफर्मेशन मेरे लिए बिल्कुल फिजूल है। तो अगर आपको बिलीव है तो आप कर सकती हैं, आपकी स्वेच्छा है। सर ने कहा कि ये जो आप एफर्मेशन कर रहे हैं वो सुपरफिशियल है, सिर्फ एक बैंडेड को चिपकाने के भांति है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप अपने कुछ प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन पाना चाहती हैं तो आपको उसके जड़ कारणों को ढूंढना पड़ेगा, और जड़ कारणों को आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आप सही तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिर्फ मेडिटेशन से ही संभव है। तो एफर्मेशन आपके सिर्फ एक बैंडेज का काम करता है थोड़े टाइम की हीलिंग के लिए, बाकी आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा। सर ने कहा कि एफर्मेशन को मैं आप लोगों को बहुत ही एक छोटे से, एफर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोग करें जो नॉन मेडिटेटर्स हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं। और थोड़ा सा एफर्मेशन कर, मतलब एफर्मेशन करने के द्वारा वो थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। पर जो मेडिटेशन करते हैं तो वो ये समझ लें कि जब सूर्य उगता है तब हमें चांद की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए काफी रहता है। पर जब सूर्य चला जाता है और अंधेरा छा जाता है तब हमें चांद की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल, जब आपके पास मेडिटेशन जैसा सूर्य आपके पास है तो आपको मून जैसे एफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर यदि आपके पास सूर्य अर्थात मेडिटेशन नहीं है तब आप एफर्मेशन को यूज करिए, वरना मेडिटेशन पर्याप्त है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्दी लाइफ के लिए, और ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, और हैप्पी लाइफ के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।